Hello everyone. Today we are going to discuss about the modern period, chapter 8, history portions from class 8. Before we going to discuss about modern period, we have to know what is history. So children, you must know what is history due to the definition of history. History may be defined as a systematic study of past event on the basis of available materials, remains and record। बच्चों, हम हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो उपलब्ध है पास्ट इवेंट को बताए अवेलेबल मटेरियल के आधार पर, रिमेन्स अवशेषों के आधार पर और रिकॉर्ड। देन अ क्वेश्चन मे बी raised in your mind, children, why we read history? We read history, there were several reasons behind it. History help us to know our past. Through it, we came to know our ancestors and their struggle for existence and their achievement. हम अपने पूर्वजों का जीवन पद्धति, उनका संघर्ष और उनकी अचीवमेंट को जान पाते हैं। It help us to get knowledge of the continuous development of man's culture and civilization. मानव सभ्यता का विकास को भी हम हिस्ट्री के माध्यम से जान पाते हैं। The study of history help us to understand the basic nature of our society. सोसाइटी के बेसिक नेचर्स टाइम टू टाइम क्या है हम लोग जान पाते हैं। Ancient or medieval history help us to a lot to understand the present day problems and in searching their solution in better way. प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसको सामंजस्य बैठाने में हिस्ट्री बहुत मदद करती है स्टूडेंट। दैट्स व्हाई वी रीड हिस्ट्री। चिल्ड्रन, देन one question may be asked, may be raised in your mind, importance of date in history. सर डेट का क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में? स्टूडेंट, date are very important. Date in history are like the skeleton system without which the body would be shapeless. बिना हड्डी का हमारा शरीर क्या होगा? मांस का एक गोल जैसा टुकड़ा, like a ball. तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? बॉडी को शेप देता है। ठीक उसी तरह से डेट क्या करते हैं? हिस्ट्री को पर्पसफुल बनाता है, उसे टाइम फ्रेम देता है। A collection of historical fact would be one meaningless heap unless the event were arranged in the sequence of their dates of occurrence. जब तक वो occurrence के डेट पर नहीं शेप हो तो हिस्ट्री जो है, कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डाटा मीनिंगलेस हो जाएगा, एक मीनिंगलेस हीप की तरह होगा, एक ढेर की तरह होगा। Dates help us to understand the trends of development within a time frame. किस टाइम फ्रेम में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1526 is a landmark in Indian history. Everybody knows in 1526 the first battle of Panipat happened and it marked the end of Delhi Sultanate and the beginning of Mughal Empire in Indian history. Likewise 1647 AD, the date of Harshvardhana, and it is a landmark of end of ancient period in Indian history.
Student, you have heard the name of James Mill? Do you know the name who was James Mill? James Mill, in the early 19th century, a scholar named James Mill wrote the first history of India that covers all period. He divided Indian history into three broad periods on the basis of religion. He called the ancient period Hindu period because most of the India was then under Hindu rulers. हिंदू रूलर्स के अंदर में ज्यादातर इंडिया के भाग थे, तो इसलिए वो जो है इस पीरियड को हिंदू पीरियड के नाम से वो बोलते हैं. Likewise, he called the medieval period Muslim period and then the modern period British और क्रिश्चियन पीरियड. क्या इस तरह का डिवीजन रिलीजन बेस्ड डिवीजन अच्छा है बच्चों? Obviously no. Your answer is no. After independence, Indian historians condemned this religion based division. ये तो डेफिनेटली वो कंडोम निंदा करेंगे ही इस तरह के रिलीजन बेस्ड डिवीजन को, बिकॉज इसमें कंप्लीट चेंजेस को इग्नोर किया गया है और सिर्फ रूलर्स के आधार पर बांट दिया गया, जो कि कहीं भी इस तरह के डिवीजन अच्छे नहीं होते बच्चों. The Indian historian chose to divide India's history into three periods: the ancient, medieval, and modern period, on the basis of important political, economic, social, cultural changes. इंडियन हिस्टोरियंस का जो हिस्ट्री का डिवीजन है इंडियन हिस्ट्री का, वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस के आधार पर है. In class 6, we have a study about ancient history, the period from prehistoric times to 7th century CE. CE stands for Common Era. In class 7, we have a study about the medieval history, the period from 8th to 18th century mark the beginning and end of the medieval period. इसका मिडाइवल पीरियड की समाप्ति का साल माना जाता है और 18th सेंचुरी को मॉडर्न पीरियड की शुरुआत का भी साल माना जाता है. इन क्लास 8 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न पीरियड. ओके स्टूडेंट, द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री which begins in the 18th century after the 1707 when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last. The date of Aurangzeb is considered to be the beginning of modern period in India. Okay, student. Student, 1600 AD में East India Company was established. Company, but gradually it took advantage of political instability. भारत में political instability था, इसका advantage उन्होंने लिया, and gradually took over the control of large part of India in 18th century. And their ruling was based on exploitation. That's why a revolt took place in 1857. After that, in 1858, the power went into the hand of British Crown. हम ब्रिटिश क्राउन के पार्ट हो गए.
The 19th century witnesses various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military actions, introduction of railways, postal services, passing different act. वो बहुत सारे उपाय किए जिससे वो अपनी स्थिति को भारत में मजबूत कर सकें। उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, मिलिट्री एक्शन करके बहुत सारे भाग को फिर से जो भाग वो कैप्चर नहीं किए थे मिलिट्री एक्शन के द्वारा कैप्चर कर लिए, इंट्रोडक्शन किए रेलवेज का ताकि चीजें जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके, पोस्टल सर्विसेज से कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक किया जा सके और डिफरेंट एक्ट पास करके वो एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट बनाए। ठीक है बच्चों। और 19th सेंचुरी में एक ग्रेट अचीवमेंट हुआ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 दिसंबर मंथ में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो है बाद में इंडियन स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया बच्चों। इन 20th century इंडिया वेयर the major event of 20th century India were the partition of Bengal, 1905 formation of Muslim League, 1906 Home Rule League, 1916 जलियांवाला बाग मैसेकर्स 1919 etc. इस तरह के इवेंट हम लोग देख पाते हैं 20th सेंचुरी में। ब्रिटिश गवर्नमेंट also introduced series of reform to pacify Indians and weaken freedom struggle। फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रहा था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हमारी ने पूर्वज जो कर रहे थे उसको कमजोर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय किए, बट वी गेट इंडिपेंडेंस इन 1947 15 अगस्त अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी अदर्स national leaders। Unfortunately, at the time, India was divided into two countries। इसका भी कारण हम बताएंगे बच्चों कि इंडिया दो कंट्री के रूप में क्यों डिवाइड हो गया, कौन से कारण रहे बाद के चैप्टरों में। Student, as you know, history depend upon sources। That's why in next video we shall discuss about the sources of information of modern period। अगले पीरियड में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियड। थैंक यू।